हेलो। हेलो, नमस्ते बच्चों। आप लोग के बहुत ज़्यादा हाई डिमांड पर कि मैम ये टॉपिक हम लोग का छूट गया था। कुछ कोरोना के केसेस उस वक्त बहुत ज़्यादा हमारे स्टेट में थे उस वक्त। तो बहुत बच्चों का ऑनलाइन में ये सब टॉपिक कवर नहीं हो पाया था। तो आप लोग की हाई डिमांड पर मैं इस टॉपिक को दोबारा से लेकर आ रही हूँ आप लोग के सामने विथ माई नोट्स, स्पेशली बिकॉज यू पीपल आर ऑलवेज आस्किंग फॉर माई नोट्स। सो दिस इज द बेस्ट वे टू give maximum students my notes actually, the best way. So the chapter is life process. That's the chapter number 6, and it is going to be come in your first term exams according to our new syllabus, CBSE की syllabus जो आज ही हमको मिली है, उसके हिसाब से ये चैप्टर आपको आ रहा है। तो इसका एक एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देख सकते हैं आप सबके आपके लिए सबसे पहले जो टॉपिक है यहाँ पे, दैट इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन पार्ट आई हैव गिवन। बहुत शॉर्ट में मैं जाऊंगी इसको सबको, आपको सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हुए, टच करते हुए कहाँ से, क्योंकि हमें फोकस पूरा तरह से करना ऑब्जेक्टिव्स पर। तो ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, दैट नाउ यू कांट लूज इवन अ सिंगल मार्क्स। So to fetch each and every marks, to fetch good marks, to fetch full marks, you have to go through your NCRT. First of all, always I used to say ki whatever, wherever, from wherever, whatever notes you are reading, any of the book you are following, but first your Bible is NCRT for your science, social science, any of the subject. So go through that, and then my notes, if it is helpful, then I'm very grateful for you all. So now the topic is heterotrophic nutrition. So the mode of nutrition in which the organism derive energy from intake and digestion of organic substances prepared by autotrophs. That means we depend on others for our food. Not only we depend on others for our food, but there are different mode also. So, and other organic sources. Organic, when we are talking, that means the living sources which are present all around us, is called heterotrophic mode of nutrition. So type of heterotrophic, it is given in your NCRT. Just type, they have given the name, they have given and the examples. Okay. So get prepared with the examples of each and every type of heterotrophic nutrition. Saprotrophic nutrition, first of all. For example, bread, mold, fungi, mushroom, yeast, many bacteria. So these are saprotrophic. Saprotrophic means they depend on the dead and decaying part of the part, or we can say organic matter. So they take their nutrition from there. Parasitic means they totally depend on others for their food. They are taking the digested food from the body. Like parasitic plant, if we are talking about like several fungi, bacteria, few plants, for example, cascutor, also we call it as amarbale. Parasitic. These are the parasitic plants example. Then animals. Bacteria I have given in plant category only. Parasitic animals, Plasmodium causing malaria. Okay. Roundworms. These are also parasitic animals. They are common intestinal parasite of man. Roundworms, ticks, lice, leeches, and tapeworm. So some are roundworms, leech and tapeworm. They are not round, they are flatworms. So accordingly, so these are parasitic animals basically. Parasitic means those who totally depend on others for their food. Absorbed food they are taking, directly digested food they are absorbing in their body. Now next is you have to study in 10th class life process chapter, that is holozoic nutrition. Holozoic nutrition, that is most of the animal. It is common in most of the animal. First of all, in NCRT, you have to study in single-celled organism. Two of the organism they have given in your NCRT, amoeba and paramecium. बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग चीज़ों को। जैसे जैसे आपकी एनसीईआरटी को आप रीड करोगे वैसे ही ये नोट्स भी बना हुआ है। For example, in single-celled organisms, the food may be taken in by the entire surface. That means we are talking about amoeba. The entire surface is responsible for taking inside the food. So amoeba takes its food using temporary finger-like extensions. This is 1 marks question. That what that temporary finger-like projections, extensions present in the amoeba, the cell surface, what we call them as? We call them as pseudopodia. Is it clear? Which fuse over the food particle, forming a food particle, forming a food vacuole. Obviously, that it actually forms a vacuole. Inside that vacuole, the food particle they take inside that food vacuole, and then the breaking down of these substances taking place with the help of enzymes present in the vacuole. See,
Inside the food vacuoles, the complex substances are broken down into simpler ones, which then diffuse into the cytoplasm. So that means that single vacuole is essential for all the things like digestion process, assimilation. They are doing there from that only. Then egestion also they are doing with the help of that vacuole only. That means simple vacuole is responsible for these processes: excretion, digestion, assimilation. So this is the thing. The remaining undigested material is moved to the surface of the cell. Okay, and thrown out. So when we are talking about thrown out, that means egestion. When we are talking about utilizing, that means assimilation. 5 टोटल स्टेप्स है ना आप लोग को डाइजेशन प्रोसेस में, तो वही सारे स्टेप्स अमीबा में भी आते हैं। डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम आप लोग का एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ये वाला डायग्राम देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं अमीबा, और यहाँ पे फूड पार्टिकल व्हेन इट इज कमिंग इन कांटेक्ट विद द अमीबा, व्हाट अमीबा डू, इट्स सुडोपोडिया ट्राई टू engulfing it, try to encircle it, and then next they take it inside the food vacuole, and inside the food vacuole the particle is there, see the particle is there. Then the process of digestion taking place, and after that the expelling of the vacuole, expelling of the undigested material, sorry, through the vacuole. So उल्टा एकदम प्रोसेस होता है, जैसे अंदर जा रहा है, इंजेक्शन हो रहा है, अब वैसे ही फिर इजेक्शन प्रोसेस हो जाता है, जस्ट उसका अपोजिट होता है. So nutrition in amoeba. So this is the diagram given in your NCERT only, important diagram. Then another diagram I have given here, that is the paramecium. Some important parts I have given here, like the outside they are having cilia, bristle-like structure. Bristle-like structure, that is cilia. So this cilia, they are present all through the body surface. Then oral grooves are present here. Oral grooves. Okay. This oral grooves, actually the last you can see the cytostome I have written. Na? This is actually the cell mouth. So through this oral groove, the food particle getting inside. Then the food vacuole you can see it is fusing through the cytostome. Cytostome से food vacuole से खाना वो उसके अंदर ले लेंगे. And then the process of digestion taking place inside the food vacuole. Then another thing is given here in paramecium, that is contractile vacuole. एक यहाँ पे बना हुआ है और एक यहाँ पे बना हुआ है, मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस. ये तो दो तरह के न्यूक्लियस हो गए, एक यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बना है. So contractile vacuole is responsible for the osmoregulation. Osmoregulation means water balance of the body. एक्सेस जितना भी पानी आता है ना पैरामीशियम के अंदर, वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू बाहर एक्सपेल कर देते हैं. सो फूड वैक्यूल में क्या होता है, खाना का डाइजेशन होगा, इजेक्शन प्रोसेस, एसिमिलेशन, इजेक्शन होगा. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू क्या होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू ऑस्मो रेगुलेशन होगा, मतलब एक्सेस वाटर जो है वो बाहर आ जाएगा. दैट इज द थिंग. एंड एनल पोर इज आल्सो देयर इन पैरामीशियम. दिस इज द अनदर स्ट्रक्चर, एनल पोर. एनल पोर के थ्रू क्या करेंगे, ये इजेक्शन प्रोसेस करेंगे. सीरिया लोकोमोशन के लिए होता है. तो ये भी आपको एक स्ट्रक्चर दिया पैरामीशियम का, तो इस पे आप लोग प्लीज फोकस करेंगे, स्ट्रक्चर पे, हर एक पार्ट पे. पार्ट आपका कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, लेबलिंग मिस नहीं होना चाहिए. अभी ऑब्जेक्टिव में हमें यही तो ध्यान रखना है कि हमें कैसे पढ़नी है, कैसे तैयारी करनी है, हम क्या करें कि हमारा एक भी ऑब्जेक्टिव ना मिस हो. So here the portion is written about the paramecium, like bacteria are its chief food component. ये आपको याद रखना है, मेन चीफ कंपोनेंट क्या होता है, तो बैक्टीरिया होता है. किसका, पैरामीशियम का. सेल हैज अ डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट. तो जहां से खाना वो लेते हैं, दैट वी कॉल इट एज साइटोस्टोम, or else we call it as cell mouth. Sorry. The food is moved to the cytostome by the movement of cilia. अब कौन मतलब साइटोस्टोम की तरफ खाना, जैसे अमीबा में हमने बात किया था कि सुडोपोडिया कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कौन किसकी हेल्प से होता है, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ सीलिया की मदद से होता है. सॉरी एक्सक्यूज मी, थ्रोट का इन्फेक्शन मेरा अभी भी बहुत अच्छा नहीं हुआ है. So movement of cilia that covers the entire surface of the cell. So this is about the nutrition in holozoic nutrition in unicellular organism. Okay, in my next video, I will cover about the holozoic nutrition in, that means in human.